would like to welcome the CEO of NAVIS. जैसे कि आपको सबको मालूम है कि unemployment is a very big issue, not only in Tripura but across India. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन प्लेटफॉर्म कम है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है और वहाँ में मैन पावर का दरकार है। आज के दिन इफ यू वांट आवर पीपल टू गेट अ बेटर लाइवलीहुड, then there are organizations like NAVIS which is working with the government of Meghalaya, government of Assam, government of Mizoram, and now we have signed an MOU with TTADC कि जो हमारे nurses हैं, जो caregivers हैं, they will be giving training in Bangalore, in language, in aftercare और उसके बाद उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट दिया जाएगा in Japan. The salary is also very good and confirmed salaries are through a proper recognized agency. अब ये जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी स्टूडेंट को अभी पे नहीं करना पड़ेगा। जब उनका प्लेसमेंट गारंटीड होगा उसके बाद ही जब उनका सैलरी निकलेगा वहाँ से एडजस्ट किया जाएगा। We will also from ADC pay 50,000 rupees per student for their training so that our youngsters get a chance to have a better life tomorrow. ये आज जापान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं and I'm very happy and I'm very thankful that the CEO ma'am has come. She's herself from Japan. इसमें क्राइटेरिया लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशन का है। तो इसमें ये नहीं है कि you have to be a BA pass or a MA pass to get the job. Anyone and everyone can apply, provided they learn basic communication and language skills. जैसे मैंने कहा है कि जापान is an aging population and they require manpower and caregivers. And हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो लोग हैं, they will be able to fit in easily with the population in Japan. So I thought this is a very good chance. और अगर आपका सैलरी 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख होता है तो आप ही का भविष्य अच्छा होगा। अच्छा, बहुत लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि जापान जाकर क्या करेंगे, बैंगलोर जाकर क्या करेंगे, ट्रेनिंग में क्या होगा। उनका अकोमोडेशन हम लोग देखभाल करेंगे, उनका रहना, पढ़ाई सब हम लोग देखभाल करेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको एक क्वालिफिकेशन भी मिलेगी और ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो बाहर में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। आज मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज फ्रॉम पंजाबीज हु आर आउटसाइड पंजाब। अगर आप केरला जाएंगे, आप दुबई जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, बहरीन जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द मलयाली पीपल आर doing very well outside and sending money back to Kerala. People are doing very well outside Punjab, sending money back to Punjab. So it is a very good chance. So I have personally visited the institute in Bangalore. I was surprised to see students from Odisha talking in Japanese. I was surprised to see students from Meghalaya talking in Japanese. I was pleasantly surprised to see people from Assam talking in Japanese. So there is a requirement and other states have signed a similar MOU and we have done the same thing. And I am appealing to all the youngsters. आप अभी young हैं, आपके पास chance है. Do not be scared to try out something which will help you grow further in life. Youngsters, ये आपका मौका है. So I am appealing through the media. हम लोग इसका वेबसाइट पे भी निकालेंगे ADC. And I wanted the CEO herself come to Tripura and address the media and address the people to say that this is a genuine institute which is already working with different governments. So
यही बोलकर आई थिंक आई हैव टच्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स. आई वुड लीव इट टू यू टू से समथिंग. Thank you for the opportunity. So I very appreciate you, sir, and the foundation, and so all the messages. So actually, we are sending the youngster from India, almost 200, 300 people. So 30%, we are sending from the northeast 30% as of now. So we want to focus on the bringing youngster from northeast more and more, because Japan needs people. So we are given that we can introduce this beautiful opportunity. So that will be helpful for your career and family's life also. I saw many experiences in our student. So they work in Japan 3 years, 5 years. So then they're bringing the transfer the money to their parents. Then they build a beautiful house. So they're settled everything. So I can see their happy face. So that I want to bring into Tripura. So I'm very looking forward to see who want to work in Japan. Thank you so much. Something. I see such talented young boys and girls from my state. They only lack in communication skills. Exactly. In terms of talent, our youngsters are as good. मतलब कि हमारे जो youth है, they are as good as anyone. लेकिन opportunity नहीं मिलता. If a nurse or a caregiver can earn 2 lakhs a month, their accommodation is looked after, everything is looked after, they can have a better tomorrow. And learning a new language is always good for us. आज जापान का एवरेज एज इज मच हायर देन एनीबडी. उनके पास एक एजिंग पॉपुलेशन है और हमारे पास यंग पॉपुलेशन है. उनके पास पैसा है और हमें नौकरी चाहिए. एंड आर पीपल हियर, जो हमारे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट. आप इफ यू गो टू ऑल द 5-star hotels, whether it's in India or abroad, maximum people you'll see from Manipur, Nagaland, Mizoram, because they have a platform. I also want the same platform to be given to our youngsters from Tripura. Our people are as good as anyone. Only thing is we lack in platform and we lack in help. So per student जो अप्लाई करेंगे उसको 50,000 रुपीज़ हम लोग इंस्टीट्यूट को देंगे सब्सिडी, और जो बाकी का फीस होगा वो ज़्यादा नहीं है. एंड दैट ऑल्सो जब आपको नौकरी मिलेगा तभी आप पे करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम लोग ऐसे करके 40-50 यूथ को हमने अगर ये अपॉर्चुनिटी दे दिया, देन सब लोग फॉलो करेंगे. बट शुरुआत कहीं ना कहीं करना पड़ता है. एंड दैट्स वाई आई एम अपीलिंग टू यू ऑल थ्रू द मीडिया. हम लोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पॉलिटिक्स के लिए. दिस इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज़ अबाउट डेवलपमेंट. Anyone should feel free to apply, whether he is a Tiprasa, he is a Bengali, he is a Manipuri, everyone is free to apply. Please apply. If our state develops, we will all develop. So, is it only restricted within the TTADC area or outside? You can apply from outside. Also. I have no, I don't want to, if I am giving somebody a chance, why not? You can apply. We would prefer that TTADC say, because that's more poor, but then I have no problem to anyone. You are most welcome. जैसे एक बैच आएगा हमारे पास, then only we can start. So जितना जल्दी हो सके, we will start within from next month. Online, offline. Online में Bangalore में आपका प्लेसमेंट